Hello there, CLAT aspirants. This is Ritik from Is the CLAT, and this is a video solution for passages 3, 4, and 5 of the logical reasoning section mock that we conducted on last Sunday, 25th April. Okay, so before that, I would want to tell you that I have already posted the explanations of the passage 1 and 2. So till question 8, explanations have been provided in the spreadsheet. I would link that down in the description box. Okay, and let us move ahead with the explanations. Before that, it would make sense for you to attempt this passage right before proceeding with the video lesson or video explanation. So yeah, with that information, let us start with question number 9. Okay, so here is question number 9. It says, what is the appropriate word for blank 1? Blank 1 was present in the first sentence itself. Okay, the correct answer is rightly. Okay, so basically this passage is a comment made by the editors of Indian Express on the fact that the Supreme Court has stayed the Allahabad High Court directive or decision to impose a week-long lockdown in 5 of Uttar Pradesh districts. Okay, so if you sort of read the following sentence, okay, that a bench of the Allahabad High Court had held that the medical infrastructure was virtually incapacitated, which means the editor is sort of agreeing with the anguish that the Allahabad High Court has. Okay, but in the subsequent sentence he says that but a lockdown is a call best left to the political executive. So the author in a way agrees with the fact that the Supreme Court has stayed the Allahabad High Court's directive to impose a week-long lockdown. Okay, so यहाँ पे rightly word rightly है, that would fit in. So yeah, that is the correct option. 69 to 70% of you did mark this, so that's good. Wrongly, completely opposite है, probably rightly, probably wrongly. See, in an editorial given by big newspapers, you would hardly find irrational arguments. Okay, so ये लोग ये नहीं बोलेंगे probably rightly or probably wrongly, so they would have a clear stand. Okay, so I hope you got what I meant कि वो लोग कि जो एडिटर्स है उनका एक क्लियर स्टैंड होता है. ऑल राइट, सो probably rightly probably wrongly का सही होना in such circumstances is very very less, the probability of them being correct. Okay, that is less. Next question, which among the following, if true, will strengthen the author's first claim made in the second paragraph? So the only work that you had to do was to identify the first claim made by the author in the second paragraph. It says the first claim is that the Allahabad High Court has been watching closely the actions of UP administration. So watching closely, this is the first part, and the second is that it has been periodically hauling up the government for its omissions, जो काम उसने किया है, and omissions मतलब जो काम उसने नहीं किए गवर्नमेंट ने, and commissions जो sort of जो काम किए हैं in a wrong way, right? So ये है तुम्हारा first claim as mentioned over here. So the correct answer is option A, that the Allahabad High Court pulled up the government recently for not following the due process of law. So for not following would mean that the state government has omitted something, right? omission की बात यहाँ पे आती है, and pulled up मतलब sort of criticize करना, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि has been periodically hauling up. और another fact कि ये recently हुआ है, तो ये sort of periodically होते रहता है, right? सो ऑप्शन ए करेक्ट है. ऑप्शन बी इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं करी गई है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करी गई है. इन फैक्ट इफ़ आई सी 23 and 10, around 40% of you have agreed that option have so around 40% of you say that option B cannot be correct, right? Option B can be correct or is correct. So that is not the case, because सुप्रीम कोर्ट की बात करी गई है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की नहीं. और जो फर्स्ट क्लेम में है ना, उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करी गई है और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की. दैट इज़ वाई दिस इज़ नॉट करेक्ट, एंड डी भी गलत हो जाएगा. सी इज़ क्लियरली नॉट करेक्ट, बिकॉज ये ऑथर के आर्ग्यूमेंट के बिल्कुल अगेंस्ट जा रहा है, राइट? दैट इन द लास्ट फ्यू मंथ्स हैज़ बीन tardy और लेजी इन अ वे, राइट? सो ये हो गया क्लियर.
11th question, which among the following is the most appropriate main claim made by the author in the passage? Okay, so the correct option is C, that Allahabad High Court's anguish is understandable. हमने फर्स्ट सेंटेंस में ही देखा, राइट, फर्स्ट फ्यू सेंटेंस में ही कि ऑथर जो है और एडिटर जो है वो सॉर्ट ऑफ ही अग्रीज विद द फैक्ट अलाहाबाद हाई कोर्ट्स एंग्विश, क्योंकि उन्होंने द अलाहाबाद हाई कोर्ट found the medical infrastructure to be virtually incapacitated, right? So एक वो argument है कि ये correct होगा, और दूसरा बात ये है कि this option also contains the fact or the opinion of the author that the decision is best left for the state government to decide. Now many might argue that option A में भी तो वही mention किया गया है that the decision should be taken by the political executive, but उसके अलावा ये दोनों म्यूचुअल बातें हैं इन ए और सी में, लेकिन ऑप्शन ए में रीज़न दिया गया है कि वाई पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के हाथ में डिसीजन रहना चाहिए, बट ऑप्शन सी जो है ना एक अलग एंगल, एक अलग एलिमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है उसको लेके आ रहा है कि द फैक्ट दैट द ऑथर अग्रीज विथ द फीलिंग्स, इमोशंस और द इन अ वे एंग्विश ऑफ द अलाहाबाद हाई कोर्ट, right? He understands that, but he has rightly pointed out that the decision is best left for the state government to decide. So एक तरफ ये एलिमेंट है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की sort of censure जो उसने सुप्रीम गवर्नमेंट के खिलाफ करी है, that is justifiable or understandable, okay? On the other hand, we have reasons for the fact that this decision of lockdown should best be left for the political executive. So दोनों में वेट किसका ज़्यादा है? ऑप्शन सी का डेफिनेटली ज़्यादा है, राइट? सो दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट. ऑप्शन बी सेज दैट द यूपी एडमिनिस्ट्रेशन वुड डू वेल टू लिसन केयरफुली टू द इलाहाबाद हाई कोर्ट्स कॉन्डेमनेशन. यहाँ तक ठीक है, लेकिन उसके बाद एंड द स्टेट्स हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी इमीडिएटली फिक्स्ड. Now if you see, if you go to the last paragraph, here he has said that there are many gaps in the state's health infrastructure and it would require a long haul, a long process and sustained investment to fix that thing. Whereas यहाँ पे क्या बात करी गई है कि it should be immediately fixed. So दोनों contrary हैं, right? So that is why option B would not be correct. Okay. ऑप्शन ए भी गलत है. ऑप्शन डी, द हाई कोर्ट ऑर्डर्ड अ लॉकडाउन सिंस द स्टेट गवर्नमेंट्स मेजर्स वेर नॉट प्रूविंग फ्रूटफुल. वेल दिस ऑप्शन माइट बी ट्रू, लेकिन ये मेन आइडिया के लिए काफ़ी नैरो ऑप्शन है क्योंकि बस ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को कवर कर रहा है, वेयर एज ऑप्शन सी इज डेफिनेटली कवरिंग टू इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, राइट? एंड एनी वे बहुत 10% लोगों ने मार्क करी है, तो आई थिंक प्रॉडली यू गाइज अग्री कि ऑप्शन डी करेक्ट नहीं होगा. सो ऑप्शन सी करेक्ट है. आई होप इट इज़ क्लियर. बाय द वे, इफ़ यू फेस एनी मोर डिफिकल्टी और इफ़ यू हैव एनी मोर डाउट्स, कंसर्न्स, क्वेरीज रिलेटेड टू एनी ऑफ द क्वेश्चंस, प्लीज़ फील फ्री टू ऐड देम इन द कॉमेंट बॉक्स और मेल इट टू मी at aceclat@gmail.com. Okay, question 12 says that which among the following can be validly inferred from the passage? Option A says that the UP state health infrastructure is poor and should be fixed immediately. Well, as we discussed कि ये immediate step से काम नहीं चलने वाला है, author ने बोला है it would take a long and sustained effort. So that is why option A is not correct. Option B says that the author heavily criticizes the Allahabad High Court's attempt to judicial overreach. हमने मेन आइडिया में बात करी कि ऑथर अंडरस्टैंड्स द एंग्विश ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट, और यहाँ पे क्या लिखा है? ऑथर हेविली क्रिटिसाइजेज द इलाहाबाद हाई कोर्ट्स अटेम्प्ट टू जुडिशियल ओवर रीच. सो दिस इज़ अ वेरी एक्सट्रीम ऑप्शन. जुडिशियल ओवर रीच एक बहुत ही हैवी वर्ड है यहाँ पे यूज़ करने के लिए, एंड ही डज नॉट heavily criticize. Okay, he in fact, the author, he or she in fact agrees, not agrees but understands कि हाँ भाई ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो सेंचर है, जो कंडेमनेशन है, that is understandable. Okay, so option B is not correct again. Option C, the measures taken by the government have shown considerable progress. If you read the passage carefully, it is clear कि in fact even in option D of the previous question, that the Allahabad High Court ordered a lockdown since the state government's measures were not proving fruitful.
और यहाँ पे क्या लिखा है, दे हैव शोन कंसिडरेबल प्रोग्रेस। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसीलिए ना सॉर्ट ऑफ लॉकडाउन इम्पोज किया था, बिकॉज द स्टेट गवर्नमेंट्स मेजर्स वर नॉट प्रूविंग फ्रूटफुल। ये क्लियरली कॉन्ट्राडिक्टरी है, एंड ऑलमोस्ट very only 5 to 6% of you have marked that correct. Okay, so जिसने भी ये मार्क करा है ना सी, please work on your basics, I would say. Question number 13. It was a fairly easy question. I don't know why only 55% of you got correct. The pronoun it in the first claim made by the author in the passage refers to. सिर्फ इतना ही आइडेंटिफाई करना था यार, राइट, दैट द फर्स्ट क्लेम मेड बाय द ऑथर इन द पैसेज. The first claim is made in the first sentence itself, that the Supreme Court has rightly stayed the Allahabad High Court directive to impose a week-long lockdown in 5 districts in UP following what it deemed a failure of the system. कौन it? मतलब यहाँ पे Allahabad High Court की बात हो रही है, right? Read again. The Supreme Court has rightly stayed the Allahabad High Court directive following what it deemed a failure of the system to deal with the spike in COVID-19 cases. So definitely option A is correct. Allahabad High Court को रेफर करा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है. जिसने भी ये गलत करा है ना, यू नो, अगर सिली मिस्टेक था तो अलग बात है, लेकिन इफ़ यू डेफिनेटली बिलीव कि ऑप्शन ए करेक्ट नहीं होना चाहिए, देन आई थिंक यू शुड वर्क ऑन योर ग्रामेटिकल स्किल्स. ओके, ऑप्शन बी इनकरेक्ट है, ऑप्शन सी डी. आई वॉज लिटिल सरप्राइज्ड कि यू नो, I think, yeah, 24% of you have marked option C. Please work on your basics, I would say. Okay. Next passage. Let's move to the next passage. Yep. So let's start with the second passage of the video lesson or video explanation, or the fourth passage of the test. This is about India's malnutrition levels that are almost twice the level of many African countries, and India was put much behind even, notice the use of the word even, UK, USA and Canada. Okay, so let us straight away move to the questions. First question says, question 14 says, which one captures the essence of the passage? A is India needs a two-pronged approach or program to counter food insecurity. 37% have gone with this. Okay, so basically confusion A और C में ही था. B, India is a forerunner in world agricultural goods production. Obviously it is not correct, right? Even if you read the passage very cursorily, ये clear हो जाएगा. On option D, India needs to rise its food production. No, food insecurity necessarily problem नहीं, as I said. It is the food distribution process that needs to improve. Okay, पूरे passage का main idea जो है ना यार, it is definitely कि there is inadequate food security in India in spite of provisions होने के बाद भी हमारी food distribution system अच्छी नहीं है. Okay, I hope this is correct. As I said, if you feel anything, you know, explanations, if you feel they are unconvincing, please write that down in the comment section. I would try my best to resolve them. Okay, based only on the passage, the second question, based only on the passage, which among the following may be inferred? Based only on the passage. Now this is important, okay? Based only on the passage. This, I thought that I should give you a learning over here from this by asking this question, that we should not or we must not apply any external information, especially in an inference question. Okay, see, option B ही correct है, and only 8% of you got this one correct. See, it says that UK, USA and Canada are perhaps, look at the wording. It is not saying that it is definitely, but it says that they are perhaps countries where food security is not adequate. And ये भी मैंने emphasize करने की कोशिश करी थी कि based only on the passage. Outside information लगाए अपन तो ये clear है कि UK, US और Canada में food security की कोई as such problem नहीं है. Right? If you read the second sentence, the Global Hunger Index report has given India the 94th rank among 107 countries, much behind. Notice the use of the word even. Passage के शुरुआत में ही मैंने बात करी थी, right? Much behind even UK, USA and Canada. इससे ऑथर क्या इंडिकेट करना चाह रहा है कि UK, USA and Canada are not so
are not countries with high food security. Okay, that is why option B is correct over here. And option and all the other and option A and C can be eliminated as well. A says producing food more than required is not insufficient to achieve food insecurity. There is a use of double negative over here, the double negatives, right? Producing food more than required is not insufficient. Simply अगर लिखा जाए तो ये sufficient. Okay, ये इसका मतलब. And 47% of you could not identify this. Producing food more than required is sufficient to achieve food insecurity. अगर ये बोला जाए तो ये ट्रू नहीं है, राइट? क्योंकि ऑथर का मेन आइडिया ये है कि इन स्पाइट ऑफ प्रोविजंस इंडिया डज नॉट हैव एडिक्वेट फूड सिक्योरिटी. ओके, सो ये इनकरेक्ट हुआ. ऑप्शन सी इज ऑल्सो इनकरेक्ट दैट फूड सिक्योरिटी इन इंडिया हैज़ इम्प्रूव्ड सिंस द लैंडमार्क केस ऑफ राइट टू फूड. राइट टू फूड यहाँ पे है. ओके, फॉलोइंग सेंटेंस में ही इट इज़ अ ग्रिम फेलियर दैट 73 years आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया कंटिन्यूज टू बी gripped with the problem of food insecurity. So definitely यार यहाँ पे कोई इंडिकेशन नहीं है कि राइट टू फूड के केस के बाद फूड सिक्योरिटी इंक्रीज या फूड सिक्योरिटी इम्प्रूव हुई है इंडिया में. ऑलराइट, या सो क्योंकि ऑप्शन बी इन्फरेबल है, ऑप्शन डी कैन नॉट बी इन्फर्ड. ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट एंड वी मूव अहेड. Question 16 says which among the following would not be a logical course of action from the author's first suggestion. Okay, A say okay, तो author's first suggestion, author ने दो suggestion दिए, right? Second paragraph में the first suggestion is the government must ensure remunerative prices for farm produce. मतलब farm produce के लिए उनको ठीक ठाक प्राइस मिलना चाहिए, and for this the minimum support price should be made available to the maximum range of farm products. Option A में क्या हो रहा है देखो, a scheme in which MSP of pulses has been decreased from 2500 per quintal to 2200 per quintal. यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है पता है? यहाँ पे ये ऐसी स्कीम है जिसमें MSP ऑफ पल्सेस या किसी भी प्रोडक्ट, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की MSP हैज़ बीन रिड्यूस्ड और डिक्रीज्ड. ओके, सो दैट इज़ वाई option A would not be a logical course of action. Option A is not correct. Option B says that a scheme in which 10 kilograms of food grains are distributed per month free of cost to destitute persons above 65 years of age. Again, this is not related to the author's first suggestion, it is related to the author's second suggestion. Okay, so option B भी correct नहीं है. Question है कि which among the following would not be a logical course of action. So option C correct होगा, both A and B, that both A and B would not. So what it means is कि both A and B would not be a logical course of action. Okay, that is correct, and only 15%, 16-17% of you have got this correct. Okay, 17th question. In which among the following phrases or idioms would you attribute to India's food insecurity problem despite having provisions? यहाँ पे एक ही फ्रेज रेलेवेंट है, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी. जब आपके पास बहुत ज़्यादा सामान होता है ना, काफ़ी सामान होता है, तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी ठीक रखना पड़ता है, नहीं तो दैट इज़ व्हाट प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी इज़. ओके, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट एंड 40% of you have got this correct, so that's good. Let us move to the next passage now. This passage is a comment, or it is a editorial on the fact that the Maharashtra government wants e-commerce companies to deliver only essential goods. Okay, question 18 says which among the following captures the essence of the passage? 70% of you have got this correct. It says that home delivery should be classified as an essential service. यहाँ पे अगर तुम पूरा पैसेज पढ़ोगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा, पूरा पैसेज नहीं, सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ से समझ में आएगा. इट सेज दैट नॉन एसेंशियल गुड्स आर बार्ड फ्रॉम डिलीवरिंग. दैट प्रीफिक्स नॉन followed by a hyphen spells a universe of arbitrary decisions, the capacity to harass, extort and delay normal business and a blight on both the economy and the exchequer. So जो प्रीफिक्स है नॉन एसेंशियल गुड्स के पहले, एसेंशियल के पहले नॉन, राइट. द
ऑथर इज सेइंग कि उससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं. एंड यहाँ पे उसका सजेशन है दैट वी अर्ज द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड ऑल अदर स्टेट गवर्नमेंट्स टू क्लासीफाई होम डिलीवरी without getting inside, to classify home delivery as an essential service without getting inside the package that is delivered. So author ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट्स को ये नहीं, it should not matter to them कि which package or what kind of package delivered. They should unilaterally make home delivery as an essential service. Okay, so that is what is correct. ऑप्शन सी भी वही इंडिकेट कर रहा है. ऑप्शन ए में थोड़ा आई हैड ट्राई टू प्ले विद द वर्ड्स की क्लासिफिकेशन ऑफ होम डिलीवरी इज एसेंशियल टू क्लियर कन्फ्यूजन. इसको थोड़ा और वर्ड थोड़े अच्छे तरीके से करता तो 20% नहीं 30-40% तक तुम लोग फंसते थे इसमें. एनीवे 10% हैव मार्क्ड बी एज वेल. डिलीवरी ऑफ नॉन एसेंशियल गुड्स लीड्स टू आर्बिट्ररीनेस. ऑथर ने क्या बोला है कि नॉन एसेंशियल गुड्स नहीं, ये जो प्रीफिक्स नॉन लगा दिया ना, दैट लीड्स टू आर्बिट्ररीनेस. ओके, जो भी 10% लोगों ने मार्क करा है ना, 5 लोगों ने, दैट इज माई एक्सप्लेनेशन टू दिस. ऑप्शन डी सेज डिलीवरी ऑफ ऑफिस गैजेट्स शुड बी मेड अ प्रायोरिटी. दिस इज अ वेरी वेग ऑप्शन टू बी ऑनेस्ट, राइट, एंड नन ऑफ यू हैव राइटली मार्क दिस. ओके, सो ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है. लेट अस मूव फर्दर टू द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन. विच अमंग द फॉलोइंग इज सजेस्टेड बाय द ऑथर. ऑथर ने क्या सजेस्ट करा है. ओके, ए सेज सम गुड्स वंस क्लासिफाइड एज एसेंशियल आर नाउ डीम्ड नॉन एसेंशियल. वेल, जो ऑथर ने सजेस्ट किया वो बिल्कुल अपोजिट है. दिस इज एब्सोल्युटली कॉन्ट्राडिक्टरी. ऑथर ने ये सजेस्ट करा है कि सम गुड्स वंस क्लासिफाइड एज नॉन एसेंशियल, फॉर एग्जाम्पल ऑफिस गैजेट्स, आर नाउ कंसिडर्ड और आर नाउ डीम्ड एसेंशियल. ओके, सो ये है. जिन्होंने भी 10% लोगों ने, या फिर बोथ ए एंड बी वाले कितने हैं, सी, सो 33%, 1/3 ऑफ यू could not identify this. That is why it is recommended to check each and every option twice, okay, before proceeding. Option B is correct. Keeping food delivery out of essential services will be challenging for young professionals. कैसे? उनके खाने के लिए, राइट, उनके खाने के लिए. What about those who run small food delivery businesses? एंड यहाँ पे यंग ऑफिस गोअर्स, यंग प्रोफेशनल्स की बात करी गई है. दैट इज़ वॉट द ऑथर इज सजेस्टिंग. आई होप दिस इज क्लियर. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. Which among the following weekends the Maharashtra government's move to allow e-commerce companies to deliver essential goods? Well, the correct option is not B. Okay, correct option is option D, जो कि neither A nor B, 43% have marked. Option A says that consumers are sensitized to sanitization protocols while taking delivery. So basically this means that consumers have now been sensible enough to follow sanitization protocols while taking delivery. So यहाँ से ना यार ये weaken नहीं कर सकता. Okay, it cannot weaken the Maharashtra government's move to allow e-commerce companies to deliver essential goods. जब essential goods deliver हो रहे हैं तो हमें इस पे से कोई flaw निकालना है. सो इस मूव का हमें कोई फ्लॉ निकालना है. ऑप्शन ए डज नॉट अफेक्ट दिस और इन अ वे स्ट्रेंथन्स दिस मूव कि कंज्यूमर्स तो भाई सेंसिटाइज्ड है. दे नो कि दे हैव बीन फॉलोइंग सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स. सो प्रॉब्लम क्या है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के इस मूव में? ओके, सो दैट इज वाई ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट. ऑप्शन बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट. इट सेज that barring the delivery of non-essential goods will ensure that the economy sustains minimal damage. So minimal damage, बहुत कम डैमेज होता है. So अगर डिलीवरी नॉन एसेंशियल गुड्स की नहीं भी हो रही है तो ये ऑप्शन ये सजेस्ट कर रहा है कि देयर वुड ओनली बी मिनिमल डैमेज. ओके, सो दैट इज़ वाई ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट होगा यहाँ पे. Okay, well this might be debatable. Okay, this some questions you might feel that they are debatable. बट क्वेश्चन सेटर के दिमाग में ये ऑप्शन गलत है. सो यहाँ पे तुम्हें सॉर्ट ऑफ
Even if you, let's say, have marked B, you should not feel disheartened, but option D correct है यहाँ पे. Okay. Surprisingly, only 76, only less than 10% of you have marked B. Alright, so I hope passage 3, 4 and 5 clear होगी. अगर clear नहीं हुआ, please shoot me a question. मैं अपना टेलीग्राम आईडी भी दे दूंगा, वहाँ पे भी we can sort of debate, थोड़ा बहुत डिबेट मैं कर सकता हूँ. ऑलराइट, लेकिन उससे पहले ना एक बार पैसेज को ध्यान से पढ़ना. मेरे एक्सप्लेनेशंस को अगर लगे तो वापस सुनना. मैं चैप्टर्स बना दूंगा यहाँ पे. ओके, तो तुम्हें क्वेश्चन में पहुँचने पे आसानी होगी. उसके बाद भी अगर तुम्हें कुछ डाउट रह रहा है तो कमेंट कर दो, या फिर ईमेल कर दो, या फिर टेलीग्राम आईडी पे रीच आउट टू मी ओवर देयर. ओके, सो थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी टिल द वेरी एंड. आई होप explanation would have made sense. And yeah, I will see you in the next one. Till then, goodbye, take care, and yeah, stay safe. All right, bye.